Delhi government's flip-flop over odd-even scheme says if air quality will reach severe plus category, then we are going to think of implementing the odd-even scheme. Now, initially there was talk that Delhi government is going to introduce the odd-even scheme to ensure that the excess vehicles are off the road. But here it appears that the Delhi government now doing a flip-flop over the odd-even scheme, saying that if the air quality worsens to the severe plus category, only then we're going to rethink about implementing the odd-even scheme. Gopal Rai, as he speaks to the media, addresses this pollution concerns in the state. Let's have a listen. 13 तारीख से 20 तारीख तक ऑड इवन लागू करने का निर्णय लिया था। प्रदूषण के स्तर में गिरावट को देखते हुए इसे पोस्टपोन कर दिया गया था। आज बैठक में निर्णय लिया गया था कि अगर दिल्ली की हवा क्वालिटी अगर सीवियर प्लस कैटेगरी में अगर पहुंचती है, तो अगर 450 से प्लस अगर सीवियर प्लस कैटेगरी में अगर एक्यूआई जाता है, तो फिर सरकार इसकी समीक्षा करके फिर निर्णय लेगी। All right, that's Gopal Rai, who says only if it gets to severe plus category will we rethink of introducing the odd-even scheme. Remember, there's really harsh criticism on the government, be it the Aam Aadmi Party, of course, who's responsible for the Delhi's air quality index, and also allegations made against the BJP at this point for instigating people to burst firecrackers on the occasion of Diwali. This blame game between AAP and BJP that continues, with the people ultimately reeling under this severe pollution crisis. Kumar Kunal joining us on the phone line. Kumar Kunal, there's a solution that the Delhi government needs to pull out to quickly bring down pollution levels, but when asked about the odd-even scheme, Gopal Rai says let the air quality get to severe plus category. Only if it does, then we will think of implementing the odd-even scheme. What's stopping them from going back on that? They first said that they will introduce odd-even, then they've gone back on it. What was the reason for that? Actually, the GRAP 4 is already being implemented in Delhi, and that GRAP 4 will remain implemented for the time being. What Environment Minister Gopal Rai has told us during the press conference, that if the situation will be worsened further and if the air quality will go in 450 plus category, that is severe plus category, then another meeting will be there, and then they will reconsider a plan to implement odd-even scheme in Delhi. Actually, what happened during the Supreme Court the hearing, that Supreme Court told that odd-even scheme is not that impactful during the last stage when it was implemented. So now everything should be considered before the implementation of odd-even scheme, and hence he has categorically said that if the air quality will further dip and it will move in 450 plus category, then Delhi government will reconsider its decision to implement even odd scheme in Delhi. Okay. Kumar Kunal, thank you very much for joining us. Let's just hope that there's some respite for Delhiites at this point, as air quality index has become severe in some parts of Delhi, 900 that it's being reported. Delhi pollution politics, they're now playing out with Aam Aadmi Party accusing the BJP of trying to instigate the people of the state to burst firecrackers despite the Supreme Court's ban on it, while accepting that there is high air quality levels where the pollution levels have basically skyrocketed. The Delhi Mantri pinning the blame on the BJP, claiming that it's all responsibility should be taken by the BJP leaders for instigating crowds to go on and burst firecrackers on Diwali. BJP has responded, slamming the Kejriwal government for blaming Hindu festival for being the real contributor, while BJP listing out the number of stubble burning incidents coming in from Punjab, where the Supreme Court on that front too has put a complete ban on stubble burning, almost suggesting that despite that ban, that stubble burning too still continues, highlighting how pollution levels, that's the real main cause and not the Festival of Lights. Ban on firecrackers was brazenly violated in several parts of the national capital, Delhi, all across this region for the last 2 days as people celebrated Diwali.
आज लोगों ने अपने आप पटाखे नहीं जलाए, लेकिन जिस तरह से हुआ है और तीनों राज्यों में, क्योंकि भाजपा चाहती थी पटाखे जले और तीनों राज्यों में पुलिस भाजपा के पास, परिणाम हमारे सामने है। अपनी नाकामियों का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी को मत छोड़िए। पंजाब से जो पराली आ रही थी उसकी वजह से दिल्ली के अंदर प्रदूषण हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट ने डांट मारी तो 2 दिन तो पराली बंद रही, लेकिन कल 1482 में से 982 मामले पंजाब से पराली के आए हैं। उस पर आप कुछ नहीं बोलेंगे, उस पर आप चुप रहेंगे। दिल्ली के लोग बहुत दर्द में हैं कि उनको पटाखे जलाने को नहीं मिले, और दिल्ली पुलिस को मैं बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने कोर्ट की, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तामील कराने में बहुत हद तक सफलता पाई। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल पटाखे नहीं बजे, लेकिन ना के बराबर बजे। इनको बीजेपी से इसलिए परेशानी है कि बीजेपी संस्कृति को होने देना चाहती है, पर्व त्योहारों को होने देना चाहती है। हमें दर्द है कि पटाखे नहीं बजाने को मिल रहे हैं दिल्ली में, क्योंकि पोल्यूशन कारण है। मगर मैं सपोर्ट कर रहा हूं कि नहीं भाई ठीक है, थोड़ा रुकते हैं। लेकिन इनकी जो मनसा है वो तो ऐसी है कि दिवाली ही न मने लोगों की। एक हफ्ते पहले जो पॉल्यूशन के कारण थे उनके ऊपर आप काम नहीं कर रहे, लेकिन आप ठीकरा फोड़ना चाहते हैं बच्चों के पटाखों के ऊपर, हिंदुओं के त्योहार के ऊपर। साइंस की रिपोर्ट देखिए, आईआईटी की रिपोर्ट देखिए, पॉल्यूशन के जिम्मेदार क्या हैं। और पराली जहां आपकी सरकार है वहां पर उसके ऊपर आपने कोई काम नहीं किया, और आप ये बच्चों के पटाखों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। सबको समझ में आ रहा है कि आप पॉल्यूशन से नहीं लड़ रहे, आप विज्ञान का सहारा नहीं ले रहे, आप तथ्यों का सहारा नहीं ले रहे, आप केवल एक धर्म विशेष के त्योहारों से लड़ना चाहते हैं। गोपाल राय जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आम आदमी पार्टी तो कहती थी 2018 में कि मुख्य कारण प्रदूषण का पंजाब की पराली है, हमारी सत्ता आएगी 1 साल में समाप्त कर देंगे। भाई सुप्रीम कोर्ट के 2 बार फटकार लगाने के बाद आज भी पराली जल रही है। कितना आपके मन में जहर भरा हुआ है कि कोई समुदाय अगर अपना पर्व मनाता है तो उसी पर दोष डाल दो, दिवाली के ऊपर ही दोष डाल दो पूरे प्रदूषण का। और 15 दिन पहले क्या हो रहा था उसका कोई जवाब नहीं। अब 10 दिन बाद जो प्रदूषण होता रहेगा उसके लिए भी दिवाली जिम्मेदार है, उसके लिए भी पटाखे जिम्मेदार है। It is ironic that a country which could close down at a 4-hour notice for a lockdown cannot control or cannot implement a Supreme Court order. Obviously, there was a lack of will and there was no enforcement in order to enforce that order. Even in Lutyens, Delhi, that is where the Supreme Court is, you had firecrackers going off till 2 a.m. in the morning. Every restriction was flouted with impunity.